Okay, hello everyone. Good evening. क्या हाल चाल है? I hope you guys are doing great. I hope you guys are doing well. Welcome to the last session, or welcome to the last question hour, or rather the last segment of this question hour, which is based on law of contracts. आज हमारा क्वेश्चन आवर का ये पूरा जो 10 सीरीज इवेंट था, ये जो 10 क्विजेस का पूरा एक मेगा लाइव क्विज वाला इवेंट की सीरीज थी, वो आज खत्म होगी। एंड ऑल्सो आप लोगों को बता दूं, एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि in order to get yourself enrolled for the judiciary championship which will be starting from tomorrow, you can get yourself enrolled from the link given in the description box. तो आप लिंक पे जाइए, वहां पे जाके आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं फॉर द जुडिशरी चैंपियनशिप दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंड विच विल बी हेल्ड ऑन 22nd, 26th एंड 29th ऑफ नवंबर. Fine. And it will be based on MPCJ, UPPCSJ, and Bihar Judicial Services Examinations pattern, respectively. Fine. So let's just get started. But before getting started with the quiz, एक चीज आप लोगों को बता दूं कि इन ऑल दीज मिनी क्वेश्चन आवर्स, इन अराउंड 9 क्वेश्चन आवर्स आप लोगों के हो चुके हैं, दिस इज द 10th क्वेश्चन आवर, द लास्ट क्वेश्चन आवर। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे, या रादर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को हमने एनालाइज किया, उन्हें पढ़ा, उन्हें समझा, उनके ऑप्शंस को देखा, ये समझा कि वो क्वेश्चन सही क्यों है, उनके आंसर्स जो दिए हुए हैं वो सही क्यों है, क्यों गलत हैं, क्या है, एक्स वाई जी। हमने सारी चीजें देखी, बट जो एक बेसिक आउटकम हमें मिला है in the last 9 and including this 10th question are, that is basically the knowledge that you have gained out of it. तो इन क्वेश्चन आवर्स को अगर आप बार बार भी देखेंगे तो आपका एक रिवीजन होगा, एंड somewhere around more than 250 questions, more than 250, around 280 questions आप लोगों के कवर हो जाएंगे आफ्टर दिस क्वेश्चन आवर एंड्स। तो इन 10 दिनों में हमने ना सिर्फ खुद की नॉलेज टेस्ट की है, बट हमने खुद का एक बहुत अच्छे लेवल का प्रिपरेशन भी किया है फॉर स्पेसिफिकली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, but which is going to help us in the mains examinations as well. So let's just start with the last question r. It has been a great journey up till now, and let's give it a good finish this time. We can already see that पिछले जितने भी हमारे अभी तक क्वेश्चन आवर्स हुए हैं, उसमें हितेश वलेजा, आकाश शर्मा, and quite a few students have been backing the leaderboard's top positions. And that is the best part कि पूरी पूरी जान लगा दी है सारे एस्पिरेंट्स ने इन क्वेश्चन आवर्स में अपने पार्टिसिपेशन के थ्रू। फाइन, that is the biggest success of this question hour, and I congratulate you guys for being the witness of all these question hours. Thank you so very much for being there, and thank you so very much for liking the videos and for subscribing to our channel. So let's get started right away with the question hour. Eyes on your prize, obviously वो एंड में हम डिस्कस करेंगे, बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चंस। देख लेते हैं हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। फाइन, सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू पार्टिसिपेंट्स, अराउंड 39 40, इट्स अ गुड नंबर। 40 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं, 41 पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, आई एम प्रीटी श्योर मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ये अपने दूसरे विंडोज पे भी इस पर्टिकुलर वीडियो को ओपन करके बैठे होंगे, तो वो नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। फाइन, सो वी हैव क्वाइट वेटेड अ लॉट फॉर एवरीवन. लेट्स गेट स्टार्टेड with the last question are based on law of contracts. Make sure guys, be very keen, be very quick, and be very very accurate. Fine, let's come to the first question. पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1. In case of general offer for a valid contract, fine,
acceptor must have the knowledge of the offer before the performance. Fine. So 28 answers are correct over here. 28 answers are correct. Just a second, guys. Just a second. Just a second. Okay. So 28 answers are correct here. Let's have a look at the leaderboard. लीडर की तरफ चलते हैं. एक second, guys. Let's have a look at the leaderboard. Fine now. So Ronak is leading the leaderboard with 883 points. And second पे है हमारे पास प्रज्ञा. Then we have got Shantanu. Shantanu के बाद है हितेश, सागर, इंदु, शुभी, चारू, आरती, and Hani. Fine. So there are quite a few people, quite a few new people, as I can see today in this particular quiz. Fine. Let's move towards the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, guys. Question number 2 of 25. Let's see. Let us be very quick and keen. Under section 74, the court cannot award damages. यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी छोटी दिख रही होगी आपको. Fine. But I'm pretty sure that everything else is visible on your Mentimeter. Let's see. Okay, time's up. So 36 answers are correct. यहाँ पे most of the answers are correct क्योंकि question easy है, क्योंकि हमारा ये वाला पूरा subject ही easy है. So moving towards the leaderboard. Leaderboard की तरफ चलते हैं. Fine. Let's have a look at the leaderboard. Are there any changes? Not much of a change. देखते हैं एक बार. Leaderboard में आकाश was the fastest here. आकाश ने यहाँ पे सबसे क्विक आंसरिंग की थी. फाइन. एंड ही इज द न्यू एंट्री हियर. हितेश थोड़ा सा नीचे चले गए, शायद आंसरिंग थोड़ी सी स्लो हो गई होगी. फाइन. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 of 25. Be very quick and keen, guys. Very quick and keen. Consideration should be something in return of promises which, let's see, आंसरिंग थोड़ी सी बैलेंस्ड है क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ रहा है. But pretty much of an answering. 47, 48 answers. 17, 5, 13, 13. But the answer is both. It must have value in the eyes of both the law as well as the parties. Not the court. जैसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्ट एक आंसर लगाया गया है that both the law and the court regards it as having some value. Not the court but the law, क्योंकि law in itself will represent the court only. तो अलग अलग उसे सिग्निफाई करने की जरूरत नहीं है. But consideration must be something of it must be some subject matter which must hold the value in the eyes of law and in the eyes of the parties. अगर parties को कोई चीज valuable लग रही है, उनकी नजरों में किसी चीज की कोई वैल्यू है और लॉ भी उस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है, देन वी से दैट इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन. एन इजी क्वेश्चन made difficult deliberately. Let's see, will it have a change on the leaderboard or not? Let's see, guys. Let's see. Will there be some change? Yes, substantial change. हमारे टॉप 2 स्टूडेंट्स का ये आंसर गलत हुआ एंड चेंज की पूरी गुंजाइश है. यस, वी कैन सी इंदु was the fastest to answer this. आशुतोष ने एक बहुत बड़ा अच्छा जंप मारा है एंड नाउ ही इज एट फर्स्ट पोजीशन. सेकंड पे आकाश पोजीशन पे आ चुके हैं, सेकंड पोजीशन पे. थर्ड पे वत्सल है, डूइंग रियली वेरी वेल. देन इंदु, देन अदिति. फाइन. मनीषा, स्तुति, मानस, रौनक, सागर, बकअप गाइज, एवरीबडी एल्स. बकअप गाइज क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इज एन इजी सब्जेक्ट. आज जैकपॉट हो सकता है आपका हो जाए. फाइन. Let's move towards the next question. Question number 4 की तरफ चलते हैं. Question number 4 और 25. Let's have a look at it.
In which of the following cases it was held that liability of guarantor is co-extensive with that of the principal debtor? Now this is a difficult question, a bit difficult, थोड़ा सा difficult है यहाँ पे. Fine. But yes, we have got the answers. Let's see. Complete voting. Everybody voted. No, only 50 of you guys voted. So, yes, the answer is infrastructure leasing financial and services limited versus Vijay versus Prabhu. Fine. So, 30 answers. Easy question. बहुत ज्यादा गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है. Let's have a look at the leaderboard. लीडर बोर्ड में कोई बदलाव कोई चेंज नहीं. हमारे लीडर बोर्ड में सबने सही आंसर्स मार्क किए. But will there be some change here? Yes, there is change. Sagar was the fastest to answer this. Sagar and Hani काफी अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं. हितेश थोड़ा सा नीचे सरक गए. Fine. Now top three positions पे आकाश, इंदु and अदिति हैं. Let's move towards the next question. अगले question की तरफ चलते हैं. Question number 5 of 25. Let's see. Communication of acceptance is complete as against the proposer. That is the key, dear students. That is the key. Section 3, Section 4, Section 5, Indian Contract Act. Let's see. 3, 2, 1, and the time's up. Fine, 49 answers. And I can see a lot of wrong answers क्योंकि कई बार वो when it comes to the knowledge of the proposer and वगैरह वगैरह वो सारी चीजें हो जाती हैं. यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है? Against the proposer. नॉट अगेंस्ट द एक्सेप्टर अगेंस्ट द प्रपोजर. तो प्रपोजर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट हो जाता है जब एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल देते हैं. देन वी कैन से दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस. फाइन, बट यहां पे गलती हुई है काफी सारे लोगों से. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. विल देयर बी सम चेंज और नॉट? फाइन, गलती की बहुत कम स्कोप है, बहुत कम गुंजाइश है. तेज चलोगे गलती हो सकती है और शायद यहां हुआ है हमारे दोनों टॉपर्स के द्वारा. आकाश एंड इंदु मिस्टेक हो गई. मानस वाज द फास्टेस्ट. नाउ अदिति इज एट अ गुड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे आ गए. सेकंड पे सागर है, थर्ड पे मानस है, फोर्थ पे हितेश एंड फिफ्थ पे आशुतोष है. फाइन, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 25. If the time is not the essence of the contract, the failure to perform the contract by the specified times makes the contract. Now, how is that going to work? ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत संभाल के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. Okay, this question again has served its purpose. देखिए, question says if the time is not the essence of the contract, the failure to perform the contract by the specified time makes the contracts voidable at the instance of the promise. Fine. At the instance of the promise. ये अपने आप में correct statement नहीं है. It is valid, but the promisee can claim reasonable amount of compensation. Directly यहाँ पे इसके लिए टर्म voidable यूज नहीं किया जाता. हालांकि अगर आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टडी करें तो टाइम इज इन एसेंस से रिलेटेड क्लॉज उसे voidable ही कहता है. बट इन ऑल दिस कंडीशन आप लोग ये देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज नॉट अ कंप्लीट ऑप्शन इन इटसेल्फ. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज यूज्ड इज voidable एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रॉमिस. अगर वो प्रोमिसी होता, प्रोमिसर होता, कोई भी एक टर्म डिफाइन किया होता तो बी वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर. सो ऑल अमंग्स दीज फोर ऑप्शंस, इन चारों ऑप्शंस में से हमारे पास बेस्ट आउट ऑफ वे सिलेक्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं. दिस वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन डिलिबरेटली पुट टू यू गाइस, क्योंकि यहां पे आपको एक ऐसा आंसर पिक करना है जो कि चारों ऑप्शंस में से मोस्ट एमिकेबल हो इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड. क्योंकि टाइम इज एन एसेंस का अगर ब्रीच होता है तो उसका ट्रीटमेंट वॉइडेबल ही चलता है, लेकिन वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसके अगेंस्ट टाइम इज एन एसेंस क्लॉज का ब्रीच हुआ है. बट ऐसा कुछ भी हमारे ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया हुआ है. फाइन, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड में हलचल की पूरी गुंजाइश है. फाइन, यस, एज एक्सपेक्टेड टॉप टू पोजीशंस को छोड़ के बाकी सबने ये आंसर करेक्ट लगाया है. मानस ने अच्छी खासी जंप लगाई, ही वाज द फास्टेस्ट. फर्स्ट पोजीशन पे फिर से अदिति आ गए हैं. देन वी हैव गॉट सागर, देन मानस, देन हितेश एंड आशुतोष.
फाइन। आकाश एंड इंदु, पहले भी ऐसा हुआ था, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे थे, फिर नीचे आ गए, बट फिर ऊपर आए थे। एवरीबडी एल्स बकअप गाइस, फाइन, बकअप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइन, ओके, ये हमारा लीडर बोर्ड ही था। ओके, वाज देयर सम चेंज? सी, ओके, हम पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। फाइन, सो अदिति वाज द फास्टेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द एसेंस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज इज, इट हैज टू बी डैमेजेस। फाइन, लिक्विडेटेड डैमेजेस इज, एसेंस क्या है, इसेंशियल क्या है लिक्विडेटेड डैमेजेस का? फाइन, दैट इज द की। लिक्विडेटेड डैमेजेस का एसेंस क्या है या इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है लिक्विडेटेड डैमेजेस का? सो यस, जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द डैमेज, दैट इज द genesis, or rather that is the essential ingredient of liquidated damages. Fine, let's have a look at the leaderboard. leaderboard की तरफ चलते हैं। क्या leaderboard में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन? नहीं, बहुत ज्यादा चेंज आने की कोई गुंजाइश नहीं। फाइन, चारू वॉज द फास्टेस्ट, तो यस, शी हैज सिक्योर्ड द फोर्थ पोजिशन नाउ। हितेश ऊपर चले गए हैं, सागर थर्ड पोजिशन पे आ गए हैं, आकाश एक सेफ पोजिशन पे है बट थोड़ा नीचे। फाइन, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 25। Let's see, guys. Be very quick to answer these questions. यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए. A contract of telephone becomes complete at a place where an acceptance is heard. This was the easiest question that I could have asked you guys. सबसे easy question है. Fine. This is the easiest of all the question. This is the easiest one. Let's see. Oh, okay. 35 answers. 35 answers are correct here. 35 आंसर सही हो गए हैं। भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल, वेरी फेमस केस। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वो उस जगह पे एग्जिस्टेंस में आता है जहां पे एक्सेप्टेंस सुना गया, ना सिर्फ सुना गया बल्कि समझा भी गया। फाइन, सो इंपॉर्टेंट केसेस भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल। लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड नाउ। लीडर बोर्ड की तरफ चले, गलती की, ओ माय गॉड, हितेश का ये आंसर गलत हो गया। Will there be? Yes, some substantial change. Akash was the fastest to answer this, and we can see Aditi ने अपनी पोजीशन अच्छी खासी सिक्योर करके रखी है। सेकंड पोजीशन पे है सागर, थर्ड पोजीशन पे है आकाश, देन वी हैव गॉट शिरीन, देन चारू, देन हैनी, मानस, हितेश नीचे सरक गए, आशुतोष एंड अनुष्ठा। फाइन, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 of 25. If a person accepts a lesser amount in discharge of the whole debt, then what was contracted between the parties is known as. This is just a term, basically. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम लोग सुनते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स भी, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बड़ा भाई है तो वहां तो सुनना ऑब्वियस है। 50 answers out of which majority 27 answers were correct. It is known as remission. जा भाई माफ किया. That's it. That's remission, accepting an amount as the discharge of the whole debt which is less than the amount which is yet to be paid. Fine. So that is remission. Let's have a look at the leaderboard. ज्यादा चेंज की गुंजाइश नहीं है अनलेस आपका आंसर गलत हुआ। Fine. Yes, there are no wrong answers, thank God. And pretty quick answering by Sagar. हैनी ने एक अच्छी जंप लगाई है, एंड देन वी हैव गॉट शरीन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 25। लेट्स सी गाइस, आंसर फास्ट टू गेन मोर पॉइंट्स। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए ध्यान से। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, ओनली 49 आंसर्स। Void being immoral. The answer is simple. It's void being immoral by virtue of section 23. ध्यान रखिए कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट का एक क्लॉज क्रिएट किया जाता है दिमाग में कि ये कहीं से अनड्यू इन्फ्लुएंस तो ना लगे, बट ऐसा नहीं है। दिस इज मोर ऑफ एन इमोरल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ ए। फाइन,
Let's have a look at the leaderboard governed by Section 23 of the Indian Contract Act. Let's have a look at the leaderboard. No wrong answers. Specifically, I believe Anushka was one of the fastest to answer this. Yes. Fine. And then हैनी ने एक और अच्छी जंप लगाई है. नाउ वो फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गए हैं. थर्ड पे आकाश, सेकंड पे सागर एंड फर्स्ट पे वी हैव गॉट आदिति. Let's move towards the next question. Question number 11 of 25. Minor entering into a contract misrepresenting his age. What will be the effect? ध्यान से, ध्यान से. Okay, 50 answers. The contract is void. Obviously, it is void. Cannot be stopped from pleading his minority. माइनॉरिटी अगर प्लीड नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कैसे स्टैब्लिश करोगे? इस बात को ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन. अगर माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है अपनी एज मिस रिप्रेजेंट करके, the famous case as we all know it, Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh. Fine. So in that condition, the contract is void because it is void ab initio by virtue of being a minor's agreement. फाइन. माइनर्स अग्रीमेंट है मतलब माइनॉरिटी तो प्लीड की जाएगी ना. अगर माइनॉरिटी प्लीड ही नहीं की गई तो माइनर्स अग्रीमेंट का क्लॉज कैसे बना? फिर वो वॉइड क्यों होगा? दैट इज वाई वी कंसिडर बोथ बी एंड सी एज द करेक्ट आंसर. तो अगर यहां पे आपसे ब्लंडर हुआ है तो हम थोड़ा सा कहीं पे हमारा ध्यान भटक गया. हमने सिर्फ सोचा कि वॉइड एब इनिशियो होगा और वही लगा दिया आंसर. फाइन. Majority 29 answers are wrong. That is a big number. Let's have a look at the leaderboard. Leaderboard में हलचल की पूरी गुंजाइश है भाई. पूरी पूरी गुंजाइश है. Yes. It was pretty much expected. Pretty much expected. Fine. देखिए, आकाश was the fastest. First position पे सागर आ गए. Second position पे आकाश. Third position पे सरक गए हैं अदिति. Then we have got चारू, हैनी, मानस, शिरीन, आशुतोष, अनुष्ठा and स्तुति. Let's move towards the next question. अगले question पे चलते हैं. Question number 12 of 25. Eyes on your phones. Eyes on your phones, guys. In case of co-sureties, release of one surety by the creditor. बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा. Okay, does not amount to discharge of other sureties. This was an easy peasy question. So 36 answers are correct. Well done, guys. Well done. यहाँ पे ये आंसर देखिए आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि जब को श्योरिटीज की बात है, अगर एक को श्योरिटी डिस्चार्ज हुआ है तो उससे बाकी को श्योरिटीज की गारंटी पे कोई असर नहीं पड़ता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. फाइन. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड नाउ. 53 आंसर्स थे यहाँ पे. लीडर बोर्ड पे चांस कम ही है कि कोई चेंज होगा. इनफैक्ट देयर इज वेरी क्विक आंसरिंग. वेल डन, वेरी वेल डन गाइस. Manas was the fastest amongst all those. Fine. Rest the leaderboard remains the same. Next question पे चलते हैं. Question number 13 of 25. अगले question पे चला जाए. After expiry of time or accomplishment of purpose of bailment. ध्यान से आंसर कीजिए. आराम से पढ़िए और फिर आंसर कीजिएगा. गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं है. कोई गुंजाइश नहीं है. सिर्फ कीन रीडिंग करनी है यहाँ पे और कुछ नहीं करना. 52 आंसर्स. वेल डन. Well done. 33 answers are correct. 14. The bailee is to return the goods only on demand. No. Bailee under bailment is duty bound to return back the goods. It is the duty of the bailee to return back the goods to the bailer as soon as the purpose is accomplished or the time for which the bailment was entered into is over. टाइम खत्म हुआ, काम खत्म हुआ, बेली को अब ये ड्यूटी है कि वो उस गुड्स को बेलर को वापस करे. फाइन. सो इट्स नॉट द बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिमांड द गुड्स, इट्स बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर बैक द गुड्स even though the bailor hasn't demanded it yet because the time or the purpose is over. Fine. Let's have a look at the leaderboard. हलचल की गुंजाइश कम. Pretty much कम. ओके, दो आंसर्स गलत हो गए, हैनी एंड शरीन के. ओके, दैट्स सैड.
Will there be? Yes, some change. Akash was the fastest. आकाश एंड सागर के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। अदिति एंड चारू के बीच में भी कम डिफरेंस है। लेट्स सी अगले क्वेश्चंस में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 of 25. Be very quick. Eyes on the prize. In a pledge, the general property or ownership in goods. Fine. How does this operate? Whether it gets transferred or how does it work? Okay, slow answering and less answering. Continues in Poner, that is the answer. जब भी pledge किया जाता है, as we all know, pledge is a kind of bailment. Fine. Pledge is a kind of bailment wherein the property is given to the other person, from the bailer to the bailee, for the purpose of securing a debt. And in that case, the person who's transferring the property is known as the pawner, and the person to whom the property is transferred is the pawnee. Fine. I always give this example in my classes with my students कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझना है along with the concept of counter offer and general offer, तो do watch Pawn Stars on History TV 18 and Storage Wars for counter offer and everything like that. Fine. An invitation to an offer. Do watch Storage Wars on History TV 18. यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है? जब भी किसी एक पर्टिकुलर गुड को प्लेज किया जाता है तो इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, फर्स्ट थिंग. Second thing, the ownership is not transferred, just the possession is transferred as to secure that particular debt or the performance. That's what pledge is. अच्छा, pledge और hypothecation के बीच में क्या difference है? Hypothecation के केस में the property remains with the person जिन्होंने उस particular hypothecation को एक debt का security बनाया है. For example, कार लोन. कार लोन्स के केस में जब आप कार पे कोई एक लोन लेते हैं तो उसकी सिक्योरिटी आपकी गाड़ी ही होती है. दैट इज अ काइंड ऑफ हाइपोथिकेशन. हाइपोथिकेशन कहाँ गवर्न होता है? जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्न होती है मॉर्गेज के केस में, टीपीए में. मूवेबल गवर्न होती है प्लेज के केस में, कॉन्ट्रैक्ट्स में. वैसे ही हाइपोथिकेशन गवर्न होता है बाय द Sarfacy Act of 2002, that is the securitization and reconstruction of financial assets. ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, कभी नुकसान नहीं करते. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड नाउ. लीडर बोर्ड पे चलें तो अदिति एंड आशुतोष का आंसर यहाँ पे गड़बड़ हो गया एंड देयर इज गोइंग टू बी बिग चेंज. यस, अदिति फोर्थ पोजीशन पे सरक गए हैं. हैनी वाज द फास्टेस्ट. चारू ने थर्ड पोजीशन अक्वायर कर ली है. दैट्स रियली गुड. फाइन. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 of 25. In which of the following cases the Supreme Court held that the time was essence of contract? Landmark judgment है. This is simple. Fine. Okay, this is pretty quick answering, but less answers in this case. Okay, so AK Lakshmipati versus RS Pannalal, that is the case which actually deals with the concept of the time as an essence of contract. Fine, this is one of the landmark judgments. कभी कभी पूछा जाता है जुडिशरीज में, तो ध्यान रखिएगा. फाइन. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, मेंस में इतना ज्यादा रोल नहीं है उसका. Let's have a look at the leaderboard. Sagar, Manas and Hani का ये आंसर गड़बड़ हो गया. आकाश वॉज द फास्टेस्ट, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को और ज्यादा सॉलिडिफाई कर लिया. दैट्स गुड. फाइन. सेकंड पे नाउ वी हैव चारू. थर्ड पे सागर सरक गए हैं. देन वी हैव गॉट अदिति एंड देन वी हैव गॉट मानस, आशुतोष एंड other students, Anushka, Shireen, and everyone. Let's move towards the next question. Question number 16 of 25. Let's see. Unjust enrichment cannot be extended to give a right to the state to recover or realize when fee after it has been struck down. Fine. Which of the case deals with the concept? Fine. सो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है बेसिकली. डेरी वर्सेस स्पीक एक फेमस नाम है, हमने सुना हुआ है, बट वो फ्रॉड से डील करता है. फाइन. डेरी वर्सेस स्पीक को डेलिबरेटली यहां पे रखा गया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट अनजस्ट एनरिचमेंट से डील करता है
Somalia Organics का केस versus the state of UP. So that is an important concept. Unjust enrichment, जिसे हम लोग प्यार से क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के रिलेशनशिप बोलते हैं, उससे डील करता है ऑर्गेनिक्स केस. फाइन. चलते हैं हमारे लीडर बोर्ड पे. यहां पे पूरी पूरी गुंजाइश है, लीडर बोर्ड में हलचल होगी. फाइन. यस, इट वॉज इनएविटेबल. इनएविटेबल. सो yes, only four answers correct. सागर एंड अदिति वापस अपने सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं. चारू नीचे सरक गए हैं. फाइन. गाइस एट फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेंथ पोजीशन एंड इवन आफ्टर दैट बकअप गाइस, अभी भी आपके पास मौका है लीडर बोर्ड में जगह बनाने का. डू इट एंड गेट इन टू इट. फाइन. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ 25. बी वेरी क्विक. Be very, very quick. Section 73 of the Contract Act applies to contract for what kind of property? किस बारे में बात करता है? क्या कोई बाइफरकेशन करता है? क्या कोई बाइफरकेशन नहीं करता है? क्या कोई बाइफरकेशन मैंडेटरीली अप्लाई करता है? क्या करता है? So the answer is both A and B. It is applicable to both movable and immovable property. Fine. Let's have a look at the leaderboard now. Okay, so all the answers are correct. A bit of slow answering, but yeah, correct answers हैं. Hani was the fastest. छोटी सी एक jump लगाई है ऊपर. Fine. Okay. Now let's move towards the leaderboard. अगले question की तरफ rather चलते हैं. Question number 18 of 25. Look at your phone, guys. Who surety is bound in different sums? This is an easy question. Equally subject to the limit of their respective obligation. Fine. This is simple. अगर different sums की बात हो रही है, ठीक, तो फिर इनका केस बनता है उनकी respective obligation के हिसाब से. अगर different sums नहीं होते तो वो equal हो जाता. Fine. Let's have a look at the leaderboard. This was an easy question. Come on. यहां पे गलती की, मतलब गलती माफ नहीं की जा सकती यहां पे. Fine. Good. All the answers are correct by the leaderboard students. Fine. हितेश ने एक decent jump की है. Now he is at 8th position. Sagar, Akash, Aditi, they are pretty much comfortable at that position, but Charu and Ashutosh are not far behind. Let's move towards the next question. अगले question की तरफ चलते हैं. Question number 19 of 25. Let's see. In case of default by joint promisors, the promisee, what will the promisee do? Okay. So there are 10, 11, 21, 22 people who answered this. Can sue any one of them to the extent of his share in the promise. No, that's not how it operates. It actually is a situation wherein एक ने default किया, सब लपेटे में आते हैं. Fine, and it's not about the claim, or rather, it's not about the share that they have in that particular contract. It's about the promisee's will कि वो जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसको पिन पॉइंट करके लायबल बनाना चाहते हैं. वो ए बी सी डी चारों में से एक को भी लायबल बना सकते हैं, दूसरे को भी लायबल बना सकते हैं. फाइन. चारों को भी लायबल बना सकते हैं एंड नथिंग इज रॉन्ग विद दिस. फाइन. लेट्स मूव टुवर्ड्स द लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड की तरफ चलते हैं. चेंज की गुंजाइश कम. आकाश का सरप्राइजिंगली ये आंसर गलत हुआ है. एंड let's see, will there be some change? No, there's no change, but yes, Hitesh was the fastest to answer this question. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ 25. लास्ट 6 क्वेश्चंस. गेम हर बार यहां पे पलटता है, सो बी वेरी क्विक एंड कीन. Oh, not a question in itself under the Indian Contract Act. Fine. अब ये रीडिंग पे बेस्ड है. रीडिंग, जितनी क्विक रीडिंग उतना सही आंसर. Fine. That's how it operates. That's how it works. Fine.
Well done, dear students. Very well done. A third person who is the beneficiary under the contract can sue. Although we have studied the concepts of privity of consideration and privity of contract and the case of Chinaya versus Ramaiya, which is one of the landmark judgments, we always remember this and we always know this कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में या रादर किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं तो नो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव द राइट टू sue and that is pretty much true but the thing is जब भी हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं सो इफ देर इज अ बेनिफिशियरी हु इज वन वे और द अदर इन्वॉल्व तो फिर हम नहीं बोलेंगे कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के हकदार नहीं होते हैं दे आर प्रीटी मच एलिजिबल टू एनफोर्स दैट पर्टिकुलर contract and that is how it actually operates fine so you need to remember this the landmark case that you need to remember for your preliminary examination is going to be Chinaya versus Ramaiya उसको ध्यान रखना उसके अलावा ज्यादा चीजें एग्जाम्स में प्री में इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली तो नहीं पूछी जाती फाइन लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड नाउ फाइन अच्छा जो आपका ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप है उसके लिए एक और फ्रेज यूज किया जाता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बन सकता ठीक है लेट्स हैव अ लुक सो हितेश का आंसर यहां पे गलत हुआ है एंड विल देयर बी चेंज यस हितेश नाइन्थ पोजीशन पे चले गए स्तुति आ गए हैं एट्थ पोजीशन पे देन हैनी वाज द फास्टेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन फाइन टॉप थ्री कंफर्टेबल पोजीशन पे है लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ 25 आखिरी पांच क्वेश्चन आपकी नजर आपके टीवी स्क्रीन पर in case of breach of contract compensation can be claimed under section 73 lots of question on question number 70 yeah section number 73 but that's what it is important section number 73 is one of the important questions जिसे हम generally avoid करते हैं अपने law schools में fine so the answer is for the proximate and natural consequence of the breach this was an easy question फाइन लीडर बोर्ड की तरफ चलें तो लीडर बोर्ड में चेंज की गुंजाइश का यस फाइन बट आई बिलीव हैनी यस हैनी वाज द फास्टेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन चलिए अब चलते हैं हमारे 22nd क्वेश्चन पे आईज ऑन योर फोन बी क्विक consideration and objects are not unlawful where it is अब ये तो आपके कीन होने पे डिपेंड करता है भाई ये आपके कीन होने पे डिपेंड करता है ये जो 6 5 6 गलत हुए हैं ये एक्चुअली गलत नहीं ये सही आंसर लगा रहे थे लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अनलॉफुल फाइन तो जिसने ध्यान दिया उसका आंसर सही हुआ नन ऑफ दीज क्योंकि ये सभी अनलॉफुल बना देते हैं कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को फाइन लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड नाउ तुति चारू इनका आंसर यहां पे गलत हो गया फाइन एंड नाउ वी कैन सी स्तुति 10th पोजीशन पे आ गए हैं अनुष्ठा बैक इन द गेम 9th पोजीशन पे है हितेश वाज द फास्टेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ 25 लास्ट थ्री क्वेश्चंस लेट्स सी mere silence is not fraud unless बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आंसर करना क्योंकि वी ऑल नो कि एक पॉइंट देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि भाई यही आंसर होगा लेकिन कई बार वो आंसर नहीं होता है हमें दूसरे ऑप्शंस को भी पढ़ना जरूरी है दैट इज द पॉइंट एंड दिस प्रूव्स माय पॉइंट यहां पे देखिए आप लोग mere silence does not amounts to fraud unless there is a duty to speak and this is absolutely correct answer absolutely correct answer 16 लोगों ने मार्क भी किया है this is absolutely correct but so is when that silence is deceptive so is there is a change whenever there is a change in the circumstances to be brought to the notice of the other party ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं और इन तीनों ही केस में अगर मियर साइलेंस होता है तो वो फ्रॉड बन जाएगा फाइन ऑल्दो मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड
So the answer is all of these. ठीक. Let's have a look at the leaderboard. कहीं हमारे लीडर बोर्ड में से तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई यहाँ पे? नहीं, लीडर बोर्ड से कोई गड़बड़ नहीं हुई है. Well done, guys. Well done. Charu was the fastest to answer this. आकाश, सागर, अदिति टॉप थ्री पोजीशन पे कंफर्टेबली बैठे हुए हैं. बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है लीडर बोर्ड में. दैट्स गुड. फाइन. 24 और 25. Second last question of the question hour. Doctrine of impossibility of performance rendering contracts void is based on. Find what kind of contract or agreement or treatment is to be given here. Find कैसी impossibility की बात हो रही है. So it is supervening impossibility. What does supervening impossibility means? जिस पे किसी भी पार्टी का कोई कंट्रोल ना हो, वो पॉसिबिलिटी कहलाती है supervening impossibility, and that impossibility is what is talked about in the doctrine of impossibility and major section under section 56 of the Indian Contracts Act. And what you need to remember in this particular segment is the doctrine of frustration. इस पे मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे आप लोग बार बार रिवाइज करते चलें. ठीक. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड में चेंज की गुंजाइश कम है भाई साहब. फाइन. ओके, अदिति का आंसर यहां पे गलत हुआ है, बट क्या पोजीशन में कोई चेंज आएगा? नहीं, अदिति जस्ट गॉट सेव्ड. अदिति का आंसर यहां पे गलत हुआ था, बट पोजिशनिंग में ज्यादा चेंज नहीं आई है. थर्ड पोजीशन पे अभी भी अदिति बने हुए हैं. Fine, Manas was the fastest to answer this. Now, let's move towards question 25 of 25, the last question of this entire question R series. Fine. Let's see क्या होता है. Under section 73 of the Contract Act, special damages. Section 73 पे आज बहुत सारे questions आए. Fine. Let's see what do we have here. Okay, so we have got 26 correct answers can be claimed only by giving prior special knowledge. अगर सेक्शन 73 के एप्लीकेशन की बात की जाए, which is talking about various various kinds of damages और other compensation, तो उसका नेचर हमेशा ऐसा होना चाहिए जहां पे जिस व्यक्ति से आपको कॉम्पनसेशन क्लेम करना है उसे आपको प्रायर स्पेशल नॉलेज देनी होगी कि ये मेरा केस जो है या ये मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्पेशल गाइडलाइन क्या है या उसका स्पेशल गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है. Fine. So that is what has to be provided by both the parties, the either of the parties, both the parties and either of the parties included है वही सारी चीजें. तो यहां पे दोनों ही पार्टीज को ये प्रायर एक इंफॉर्मेशन देनी होती है. Fine. That's something that you need to remember. Let's have a look at the final leaderboard now. The question R ends today. 26 correct answers. I hope हमारे फाइनल लीडर बोर्ड में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे. ओके, बट हितेश का ये लास्ट आंसर गलत हो गया. लेट्स सी विल देयर बी सम चेंज. ओके, सो आकाश, congratulations, Akash, for winning this round of the question R. Fine, it was a टफ गेम क्योंकि इनिशियली हम लोग देख रहे थे कि भाई आकाश कहीं पे लीडर बोर्ड में नहीं थे, बट आए एंड अच्छा परफॉर्म करके फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचे. वेल डन आकाश, वेल डन सागर एंड चारू एंड अदिति. फाइन. अदिति थोड़ा सा पीछे सरक गए, बट कोई बात नहीं, यू गाइज हैव डन रियली वेरी वेल. अब जितने भी विनर्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर के, आप अपनी सारी डिटेल्स, रैंक, पोजीशन, जो भी आपका पर्टिकुलर जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी आपसे मांगा गया है डॉक्यूमेंट, वो आप प्रोवाइड कर दीजिएगा मेल पे. अदर देन दैट, accounts@legaledge.in, इस पे आपको अपनी डिटेल सारी भेजनी है. अपना पेटीएम या गूगल पे नंबर आप भेज दें, you'll get the winning amount. And with this, we come to the end of the question hour, the mega live quiz series of 10 mega quizzes, 10 big quizzes.
अब इन 10 बिग क्विजेस के जो भी विनर हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे नेक्स्ट वीक बाय अराउंड 24th या 25th आप लोगों का नाम वहां पे अनाउंस किया जाएगा। तो डू सब्सक्राइब या रादर डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम सो दैट जितनी भी हम लोग जुडिशरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वीडियोस, क्विजेस, जो भी चीजें लाते रहते हैं वो सब आप तक पहुंचे और विनर्स का जो एक फाइनल अनाउंसमेंट होगा विल बी गेटिंग अ विनिंग अमाउंट ऑफ 5,000, 3,000 एंड 2,000 respectively for securing good positions in the question are all throughout the series. They'll be getting the winning amount plus जितने भी विनिंग अमाउंट्स अभी तक नहीं भी ट्रांसफर हुए हैं वो सारे विनिंग अमाउंट्स भी आप लोगों के कल तक या बाय मोस्ट प्रोबेबली कल संडे है, मंडे तक वो अमाउंट आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फाइन। ऑल्सो जब ये वीडियो एंड हो जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना कि आपको ये पूरा क्वेश्चन आर कैसा लगा। क्या आप और ऐसे क्वेश्चन आर्स और ऐसे इवेंट्स चाहते हैं? क्या आप कुछ और तरह के और क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं? What all things do you want us to make videos about related to judiciary specifically? वो सारे suggestions के लिए हमारा comment box open है। Feel free to tell us there or feel free to write to me directly on Shubham judiciarygold@gmail.com. Fine. I hope you learned a lot. I hope you had a lot of fun. And I hope कि ये पूरा क्वेश्चन आर की सीरीज ने आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प किया होगा। डू एनरोल योर सेल्फ फॉर द जुडिशरी चैंपियनशिप। आई एम रिमाइंडिंग दिस वंस अगेन बिकॉज टुडे इज द लास्ट डेट। कल से जुडिशरी चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाएगा। एमपी, यूपी एंड बीजेएस पैटर्न पे 3 टेस्ट लिए जाएंगे। एनरोल आज ही कर लीजिए, कल आप एनरोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एंड यस, डू डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल and do follow us on Facebook for all the news related to judiciary. And yes, as I can say this again, feel free to comment, feel free to ask us doubts, feel free to let us know about the ideas or the questions that you have in your mind or you want us to bring any of the videos on those topics. Fine. So this is me, Shubham Upadhyay, Project Head, Judiciary Gold, signing off. Tada, bye bye, take care, Bela Chao, and Jai Hind.